हिंदू हृदय सम्राट माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा. Politics in our country is the ultimate power game. One such power learning came from the great strategist Chanakya. Among his sutras of Chanakya Niti, he coined a term that perhaps defines few chapters of Indian politics even today. Rolling. Sam. कट्टर शिवसैनिक मैदानही सोडत नाही आणि विचारही सोडत नाही. जिसने पहले भी लगा लोगों को कि हु इज एकनाथ शिंदे, कौन है एकनाथ शिंदे, क्या कर लेंगे एकनाथ शिंदे. Sam. उनको गद्दार आप क्यों कहते हैं? 50 कोके खाए. एकनाथ शिंदे ग्राउंड लेवल से आए. आम आदमी से मिला हुआ मुख्यमंत्री कभी महाराष्ट्र ने देखा नहीं. आज चाहे वो खुर्ची पे बैठे, जनता की सरकार वापस आएगी. Dand. तो ये उठा होने के बाद शिंदे साहब का जो मराठी में कहावत है कि सोना झड़ाळून निघतं. Because people of Maharashtra are waiting to see what was done 2.5-3 years ago. Bhed. The way the state is going, we never had so many divisions. We never had so much polarization. जब ये आइडियोलॉजी आदमी छोड़ देता है ना पार्टी, तो पार्टी ज्यादा दिन रहती नहीं. Put in simple words, do whatever it takes to achieve your goal. What has happened in Maharashtra in the last 5 years reflects that the teachings of Chanakya still hold value. A political party has been split wide open and the animosity has become bitter and personal. If Aditya Thackeray was there and he's seeing you on camera, what will you tell Aditya? There are some characters I don't respond to. An epic face-off will define who is the real Shiv Sena. Okay, now last month I was traveling through Jammu and Kashmir and Haryana covering the elections. Now I'm back to where it all began. I'm back home because it is in Mumbai and Maharashtra that arguably the biggest and the highest stakes state election battle of 2024 will be fought. And since I'm in Mumbai, I must meet a young old friend of mine. Let me first show you what happened when last Sahil, Joshi and I travelled on elections. Cheers for Amati. Mango juice time. There is so much food on this show. Sahil, how are you? Nice Good to see you back. my friend. Nice to see you back. So last time we were in Baramati, we were doing Pawar versus Pawar. That was Lok Sabha election. That was Lok Sabha elections. This time we are in Mumbai, so it has to be Shiv Sena versus Shiv Sena or Thackeray versus Shinde. This is the real big battle, or one of the many battles of the Vidhan Sabha elections of Maharashtra. No, but I have one question. Yeah, normally we start the program in the morning. शाम को क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम शाम को कर रहे हैं क्योंकि we have to decide in this program or give our viewers a sense who is the sun setting on. सूरज किस पर ढल रहा है? सूरज किस पर ढल रहा है? सुबह होगी किसकी शाम होगी? Which of the senas will see a sunrise and which will see a sunset? All set? All set. Okay, let's go to find out Sena versus Sena. You're in Mumbai. Come with us. Okay, now in 2019, Uddhav Thackeray ditched the BJP to become Maharashtra Chief Minister. But in 2022, his close aide, Eknath Shinde, ditched him, took the support from the BJP and became Chief Minister. But the fact is, the logo, the symbol of the Shiv Sena, the Dhanush Baan, bow and arrow, is with Eknath Shinde. But the name Thackeray, by which the Shiv Sena has always been running, is with Uddhav Thackeray, the Shiv Sena UBT. The question then is, who is the Marathi Manus of Mumbai and Thane with?
Mr. Akolkar. Are Sahil is dressed up also in Bombay style. No trip of mine in Mumbai is complete without meeting some old friends. Kaisa hai? Good to see you. Okay, we are having a bit of an old boys reunion because I am with two Except very me. special. Except Sahil. Yeah, Sahil of course. is young boy. I mean, I'm not part of that. So there is one young person in Sahil Joshi and there are three relatively old journalists, all of whom joined journalism in the 1980s. Girish Kuber is editor of Lok Satta, one of Maharashtra's leading newspapers, if not the main Marathi newspaper. And Prakash Akolkar is my old friend from Maharashtra Times days in the late 1980s, has authored the definitive biography of the Shiv Sena. You know, from certain angles, from certain angles, you look like Bal Thackeray. Is it a compliment or? It's a compliment. To know the future of the Sena, you need to know a little about their past. It was only a Mumbai party. मुंबई वेस्ट पार्टी some इधर उधर शिव सैनिक थे, वो पुणे में थे, नासिक में थे, but it was largely based in Mumbai and Thane. Hindutva nahi, no Hindutva. Absolutely no Hindutva. No Hindutva. No Absolutely no Hindutva. Though the name was Shiv Sena, when I went to Panipat with मनोहर जोशी, वो लोग समझ रहे थे कि ये भगवान शिव शंकर की पार्टी है, तो हर हर महादेव ऐसा नारा दे रहे थे. ये पार्टी इज नेम्ड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज ऑफ तो उस जमाने only Marathi मानुस. Only Marathi manus, and main thing, concern for middle class and lower middle class people in Mumbai who were not getting jobs. That's all. That's all. So Shiv Sena, we call it the Maharashtra party, Marathi Manus and rights of Marathi people, sons of the soil and kind of stuff. It was never honest regional party. Maharashtra unfortunately has never had any honest, true regional party. No, so what was it? If it was not an honest regional party, what was Shiv Sena? Can we say that it was not meant to be a political party? It was supposed to be kind of an organization. It's kind of an organization. Union of Marathi people. With very limited objective, with a very limited objective. The first जाहिरनामा जिसको बाला साहब बोलते थे, when they published on the day of inception, 19 June 1966, it was Marathi माणसांची संघटना. That means Union of Marathi speaking people. Look at from 1966, the time when Shiv Sena formed, to 1980. Shiv Sena had alliance with almost all the parties across the spectrum, including Muslim League. Samajwadi Party, Muslim League. You know, people should understand Shiv this. Sena had an alliance with the Muslim League. J.M. Banatwala was. J.M. Banatwala, yes. It had an alliance with the Republican Party, Kawade, Jogendra Kawade. It had an alliance with the Congress as well. You know, Murli Devra became the mayor of Mumbai with the support of Shiv Sena. With the support of Shiv Sena. Most important agenda on any political party is economic thought. Yeah. Shiv Sena's economic thought didn't go beyond Vada Pav. If you look at the history and even the present, except what Aditya is trying to do now, he's trying to convert it into a systematic political party. गिरीश कुबेर, अगर तुम कहोगे शिवसेना का आइडियोलॉजी डिड नॉट गो बियॉन्ड वड़ा पाव, तुम हमको मरवा डालोगे यार. Remember the days when Shivsena attacked us journalists? Both of us attacked. We were attacked outside our office. We were and at one rally, at a Dashera rally, Balasaheb Thackeray called me a Vinchu, scorpion, and you were called what? Socialist karate. So Rajdeep ji, I definitely sort of want to feel young and keep feeling young. So let me ask you, when was the first time you met my grandfather? Was it before I was born? 89. To Matoshri, and I must confess, Aditya, I was intimidated. You know, he was in his pipe, he was in his pomp, big built guy. But when he spoke at you and looked at you, you know, I was 24. Thoda to dar bhi tha. What's your first memory first of Matoshri? To do his interview, there was a room here somewhere, in the corner somewhere, right? So, and this hall was, I think, little smaller. So we were sitting there, and he said, "Ki, achha, wo interview kar rehne do. First, tell me a joke." So I said, "Sir, I can't tell you a joke." So he said, "Okay, let me tell you a joke." So he told me a joke, which of course I cannot tell in front of camera, but yeah, he told me a joke. It is unfair actually. This I never expect from the media.
You should have shown the other side also. Both sides were suffered actually. Come on, take it that way. मला हा मीडिया ह्याच्यावरती माझा अटॅक असतो नेहमी. बाकी आय एम जस्ट फेअर टू यू पीपल अँड आय रिस्पेक्ट यू. एनिवे. Which brings me to the Dashera rally of 2024 and the elections of Maharashtra of 2024. I must confess also to you that Shivaji Park to me is not just about the Dashera rally of the Shiv Sena, it's also the home of Indian cricket. So it is special in more ways than one. Come with me. कभी आपने सोचा था कि एक ही दिन में दशहरा दिन में there will be two rallies, one of Eknath Shinde and one of Uddhav Thackeray. This is Eknath Shinde Shiv Sena's rally. The common factor is, of course, this man. It's written Hindutva Samrat Amse Daivat. You know, my God, our God, Bala Sahib Thackeray. So that is the common factor. But what we could also see is that there is a cutout of a man in between Bala Sahib Thackeray and Chief Minister Eknath Shinde. That is of Anand Dighe. Anand Dighe is kind of a guru and mentor of Eknath Shinde, and he has got a center stage in Eknath Shinde Shiv Sena. Interesting poster because it shows three generations here. Uddhav Bala Sahib Thackeray, Aditya Uddhav Thackeray, and of course Bala Sahib Thackeray himself. I think this election will decide that. Not just the battle with Eknath Shinde, but whether Uddhav Bala Sahib Thackeray can emerge from the shadow and the larger than life persona of Bala Sahib Thackeray. This is his pitch, that he's a common man, he's man of the crowd, and that's why this is the real Shiv Sena. हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? शिरडी आप सब शिरडी नगर डिस्ट्रिक्ट शिरडी सब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आखिरी सांस तक. हाँ आखिरी सांस तक. लेकिन आपका तो पार्टी टूट गया. एक तरफ एकनाथ शिंदे. कुछ फरक नाही पडता. आम्हाला काही फरक पडणार नाही. तुकडे किती झाले शिवसेना प्रमुखांचं आम्ही शिवसैनिक आहोत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना और शिंदे सेना के बीच में फर्क क्या है? वो गद्दारों की सेना है, निष्ठावंतों की सेना है. पहले से शिवसेना में. हम शिवसेना में पहले से. शिवसेना में 99 से. अच्छा आप बताइए, आप एकनाथ शिंदे को क्यों चुना आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ के? शिंदे साहब जननेता है, जननेता. अच्छा. अगर इतना शिंदे साहब जैसा काम, शिंदे साहब जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को भूतों न भविष्य थी, ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को कभी ना पहले मिला है ना आगे लास्ट तक कभी मिलेगा नहीं. उद्धव जी एक तरफ, एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ, उनमें फर्क क्या है? फर्क तो इतना ही है कि एकनाथ शिंदे गद्दार है और हमारे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है वो अक्खर हिंदुत्ववादी है. आप कहाँ से हैं? मैं रमाबाई से हूँ. आप रमाबाई अम्बेडकर. हाँ, मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ. अरे वाह, ओके. रिक्शा चलाता हूँ, मगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ अच्छा जो गरीबों का दाद लेने वाला था. बाला साहब ने 80% समाजकारण आणि 20% ही राजकारण बोला. बरोबर. वो बात पे एकनाथ जी शिंदे शुरू से बाला साहब के साथ थे. फर्क क्या है दोनों में? जिसके बाप ने जन्म दिया है वही राज चलेगा ना. पक्ष सबसे बड़ा होता है. पक्ष बड़ा होता है. बड़ा होता है. और ये जो निकल गए ये विधायक है, ये विधायक पक्ष नहीं है. आज मराठी टक्का बम्बई से गायब हो रहा है. वो मराठी टक्का वापस बम्बई में लाने के लिए शिंदे साहब ने पाउल उछला है. SRA, MMRD, इनके माध्यम से मराठी आदमी वापस मुंबई में आना चाहिए. अरे मुंबई में वापस मराठी आदमी लाएंगे. एकनाथ संभाजी शिंदे. You must have been here so many times, right? You know, I came here first, Sahil, 1988. And I think Sharad Pawar had come back as chief minister after a very long time. There was never so much security. But otherwise, the bungalow is more or less the same. Otherwise, this is filled with people. I've never seen so many people inside Varsha before. You mean during Eknath Shinde's time? During Eknath Shinde's time. It's always filled with people. Maybe today is a Sunday, so Eknath Shinde has also decided, kam se kam Sunday par to thoda rest kare. But actually, we are not here to meet Eknath Shinde. Yeah, we are here to meet his son. Oh, It is always you coming inside. This is first time I'm coming outside to greet you. How are you? How are you? I'm good. Huh? Looking Sahil. fresh.
Unlike I'm us. always fresh. You're always fresh. Shrikant Shinde, who is leader of Shiv Sena's parliamentary party, was actually kind of in charge of the whole Azad Maidan rally. And there are two things I noticed. The first thing is Eknath Shinde's speech. He said, "Ki mala halkyat घेऊ नका." कारण मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे, आनंदीके साहेबांचा चेला आहे, असा स्वस्तात जाणार नाही, मला हलक्यात घेऊ नका. मी मैदानातून पळणारा नाही, पळवणारा आहे. In a colloquial language, don't take me lightly. Okay? So, this is a new line of Shinde's. हल्के में मत लो. किसको बोला हल्के में मत लो? मुझे लगता है किसको बोला? जिसको बोला ना, किसको साहिल, बोला? उसको पहुंच गया वो. नहीं, किसको बोला? जिसने पहले भी लगा लोगों को कि हु इज एकनाथ शिंदे, कौन है एकनाथ शिंदे, क्या कर लेंगे एकनाथ शिंदे, तो उनको जो है 2 साल पहले दिखा दिया कि कौन एकनाथ शिंदे. All set for what many believe is your biggest challenge. Would you agree this Vidhan Sabha is do or die for the Thakres? I think it's more for a state than anyone else today. The way the state is going, we never had so many divisions. We never had so much polarization. You've seen the absolute lowest kind of politics in the past 2 years. So there is one Dasra Melawa and in Marathi there is one called Dusra Melawa. हे हातपाय पसरा मिळवायत कारण सगळ्यांना मिळवायचंय. And हे आजाद नाही आहेत, हे गुलाम आहेत. They say that it's a private limited. It's Thakre Private Limited. Their party is public limited. It's Shiv Sena Limited Company, Shiv Sainik Limited. The ownership of their party or whatever that little gut is 50% Adani and 50% BJP. They are the owners of his gang. So it's not the Shiv Sainiks, according. Not at all. Yesterday, who were the Shiv Sainiks there? Anyone who is scared for his own life, for his cases, or ED, IT, CBI and has run away to Surat and Guwahati cannot be a Shiv Sainik. We call them darpokes. They're cowards. इतना ही अगर हिंदुत्व का अगर दम होता ना, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के छाती पे खड़ा रह के उसने बोलना चाहिए था कि ये शिवसेना मेरी है, ये चोरी करके भाग गया सूरत में, वो भगोड़ा है. अगर वो चाहते शिवसेना में आमने सामने बैठकर बात करते तो वो असली शिव सैनिक है. ऐसे भागकर जाने वाले बीजेपी के साये में छुपने वाले शिव सैनिक नहीं हो सकते. मैंने पूछा किसको बोला नहीं, किसको बोला. ओके किसको बोला? जर्नलिस्ट को बोला, एनालिस्ट को बोला, शिवसेना यूबीटी को बोला, बीजेपी को बोला, कांग्रेस को बोला, किसको बोला? आपने अभी अलग अलग लोगों का नाम लिया, तो हल्के में मतलब लाइटली मतलब जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ तो सीरियसली लो मुझे. जिस तरीके से I am the chief minister of Maharashtra. नहीं सीरियसली लो. मतलब आफ्टर लोकसभा लोगों को लगा राजदीप लोकसभा में, यार क्या ये पार्टी कितना दिन चलेगी, कितने एमपीज आएंगे, हाँ कितना दिन सरकार चलेगा, 10 दिन चलेगा, किसने बोला 2 महीना चलेगा, किसने बोला 6 महीना चलेगा. तो जिसने हल्के में लिया उनकी क्या परिस्थिति हो गई वो लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया. ऐसा नेता होना चाहिए और जो नेता होता है वो जनते से आना मांगता है, सोने का चम्मच लेके नहीं मांगता है. और एकनाथ शिंदे जनते से ग्राउंड लेवल से आए. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में क्या फर्क आपको लगता है? बाला साहब के विचार लेके चल रहे हैं एकनाथ शिंदे. अच्छा, तो ये देखो ना, ये जनता सब लूटी है. कुछ तो होएगा ना, कुछ तो बात होएगी तो पब्लिक इतनी आई है. मूल शिवसेना से अलग होके भी इतना जनता आ रही. बाला साहब के विचार लेके एकनाथ शिंदे चल रहा है. जनता है और वही शिवसेना. शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये फरक काय झाला? शिंदे आणि उद्धव साहेबांचं मला वैयक्तिक लय आवडत नाही आहे. त्यांना भेटायचं म्हणजे आमदार खासदारला भेटायचं आमच्यासारख्याचं काय विषय आहे, आणि तिथं वशिल्याशिवाय जाऊ शकत नाही कोण. एकनाथ शिंदे साहेबांचं आता आम्ही तर कधी भेटलं नाही, पण नॉर्मली कोणालाही भेटतात. साहिल आजाद मैदान पर थे जहां आपकी दशहरा रैली हो रही थी, और मैं था शिवाजी पार्क पे जहां दूसरी दशहरा रैली हो रही थी. कहा है तुम्हें बड़ा हीरो की तरह लग रहे हो, कैमरा को दिखाओ. हम आदित्य साहब के युवा सैनिक है. युवा सैनिक? अरे तुम युवा की तरह है, तुम तो 40-50 साल के हो गए. बताइए, एक तरफ है एकनाथ शिंदे की सेना, दूसरी तरफ उद्धव बाळासाहेब सिर्फ उद्धव साहब की सेना, सिर्फ उद्धव साहब की सेना. शिंदे गद्दार शिवसेना के मंत्री है. वो गद्दार है, वो गद्दार है. बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे के पीठ में खंजीर खुपस के ये जो सरकार स्थापन किया है, ये सरकार हमको मान्य नहीं है. ती गद्दारांची सेना आहे, ही निष्ठावंतांची सेना आहे. को गद्दार आप क्यों कहते हैं? 50 खोके खाए, हमारा पैसा खाया उसने. ये क्या एक तरह से अभी भी वो वर्ड इस्तेमाल जो होता है गद्दार, किस तरह से आप देखो, मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है आपको लोकसभा में मिल गया.
और जो हमेशा गद्दार, खोखे, खंजीर, इसके आगे उनके डिक्शनरी में कोई वर्ड्स नहीं है। सामने सामने जो है 13 सीट लड़े, 13 में से 7 सीट जो है शिवसेना जीती और 6 सीट जो है यूबीडी जीती। स्ट्राइक रेट जो है हमारे पार्टी का, मतलब शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना का सबसे ज़्यादा रहा। 2 लाख वोट जो है हमें ज़्यादा मिले। No, but you're also constantly calling them Gaddar. You're saying, But that they are. Pannas khoke, ekdam That they okay, have indulged in. suggesting that they've taken money to switch sides. They are arguing that even Aditya and Uddhav Thackeray are also still unwilling to come to terms with the fact that they've lost their government, so they keep attacking us with the same issues day after day. Absolutely. I mean, I'm unwilling to come to terms with the fact that in the past 2 years, despite having a BJP government at the center and BJP being a part of this government, you see an absolute collapse of law and order in our state today. You see an absolute collapse of administrative systems in our state today. Even when I hear you all speak, I sense a lot of bitterness. Who has started off with Uddhav Thackeray ko khatam karo and Sharad Pawar ko khatam karo? Who has started off with Nakli Santan and Bhatakti Atma? Who has gone personal? Who has gone vindictive? Who has broken a family? Who has broken a party? Who has collapsed a government and who has looted a state? My argument is, I would have still been okay if you had broken my party. I would have been still okay if you had taken everything away from us, but built my state and given jobs to the youth in my state. अभी भी महाविकास आघाड़ी का पिच आपके खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ ये है कि महाराष्ट्र का प्राइड कम किया जा रहा है, महाराष्ट्र की अस्मिता को खत्म किया जा रहा है, गुजरात को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात हमेशा ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, फेक नैरेटिव। तो फेक नैरेटिव जो है इनका लोकसभा में तो हमारे विरोध में चलना चाहिए था। विरोध में चला क्या हमारा? ये तो यूबीटी को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, उनको सिंपति अगर रहता या फेक नैरेटिव चलता तो। मराठी मानुस बोलो, अभी मराठी मानुस के नाम पर इतने सालों तक राजनीति की, क्या दिया मराठी मानुस को? क्या दिया मुंबईकर को? मराठी मानुस जो है आज मुंबई के बाहर जो है चला गया है, डोंबिवली में गया है, उल्लासनगर में गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी क्योंकि इनको लोगों को घर यहाँ पर नहीं मिल रहे। He is थाने कल्याण, outside. इनको लोगों को घर नहीं मिल रहे यहाँ पर। मराठी माणूस के मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेनेचा जन्म झाला। When I speak about jobs from Maharashtra, it's not just the Marathi people. Anyone who's living here from any part of the country, in Maharashtra, in Mumbai or Pune or Nashik or Thane, Nagpur, Nashik, people who come here for jobs, for some sort of employment, today are being, completely. Is jobs for Marathi Manus or jobs for Maharashtra? It's jobs for Maharashtra and whatever belongs to Maharashtra. For Maharashtra. For Maharashtra. And yes, why not the Marathi Manus? Let me complete Marathi Manus. You're on a roll. हाँ, मराठी मानुस। तो You मराठी also keep मानुस। rolling. हाँ, तो मराठी मानुस को न्याय देने का काम ये हमारी सरकार ने किया, शिंदे साहब ने किया, देवेंद्र जी ने किया, अजित दादा ने किया। तो इसलिए हम लोग ने जो है, हम लोग कल बातें नहीं कर रहे यहाँ पर। Shrikant Shinde spoke with conviction to us, saying that, look, we are setting up projects that will provide employment to the Marathi Manus, not just Vada Pav. We are actually getting resettling projects that have been hanging fire for years. We are getting infrastructure projects that have been hanging fire for years. The point is this, that today, what Maharashtra knows is these guys have looted the state. There are some people I don't even give much importance to and don't like speaking about. But since, unfortunately for Maharashtra and fortunately for him, the man is in the seat that he has usurped and very greedily taken to himself, let him come in front and discuss with me. नहीं, आप कह रहे हैं यानी मराठी मानुस को आप घर दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन जब मैं और कल फिर से दशहरा रैली पर जाता हूँ, जो मैंने नैरेटिव सुना कि भ्रष्टाचारी सरकार, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, आप लोग तो विरोधी पक्ष हो गए। लेकिन सबसे बड़ी सत्ता यहाँ पे जनता की है। आज चाहे वो खुर्ची पे बैठे हैं, कुछ दिनों की बात है, कुछ साल की बात है, फिर वापस जाएंगे वो, फिर से यहाँ जनता की सरकार वापस आएगी। जनता की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। अदानी, अंबानी, मोदी की सत्ता है, जनता की सरकार नहीं है। उनका कहना है लाड़की बहन स्कीम तो एकनाथ शिंदे ला रहे हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं प्रति माह। ये सब बकवास है, ये बकवास है। इलेक्शन का फंडा है। अभी जो 1500 रुपया दे रहे हैं, सब महंगाई किया। अभी सिलेंडर, ये सब तेल, तूर दाल, सब में महंगाई किया। वो इधर से दे रहे हैं और वसूल कर रहे हैं। तो एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हो? जो आम आदमी है उनका पैसा शिंदे सरकार और बीजेपी लूट रही है, वही लाड़की बहन उनको दे रहे हैं। तुम्हारे राज्य का क्या है वो बताओ? कुछ भी नहीं है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। शिंदे सेना कहते हैं लाड़की बहन से पूरा तस्वीर बदल गया है। अभी क्या है मालूम है, कुछ नहीं बदला है।
ये लोग चोर है। इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला आज तक कभी ऐसा हादसा हुआ था? तो आप मुझे बताओ, अगर इसके अंदर घोटाला नहीं हुआ तो क्या हुआ है? तो मैंने इतने सालों से शिवसेना को कवर किया है, मैं देख रहा हूँ एक पूरी तरह से बिखराव है और सब एक दूसरे पर वही आरोप लगाते हैं। वो आपको करप्ट कहते हैं, आप उनको करप्ट कहते हैं। गए 2 साल में एक भी चार्ज हमारे एक सरकार के खिलाफ आप बताइए कि एक भी चार्ज जो है प्रूव आए। इनके सरकार में आपको बताऊंगा, उन्होंने आज रेड कार्ड अरे वो कुछ भी देंगे ना, अरे वो क्या पुलिस है, हाँ वो क्या कोर्ट है रेड कार्ड देने के लिए? जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, कोविड के टाइम, इन्होंने घर में बैठ के पूरा भ्रष्टाचार किया। So you want to send Matosri to jail? You want to send I don't Matosri want to send anyone to jail. I am no one to send anyone to jail. No, you're part of the ruling government. It is court to decide. It is police to decide. Investigation will happen. Everything will happen. I am just stating the facts and the proof. आपने जो अभी निकाला कि करप्शन के चार्जेस, तो मुझे लगता है ये सब जो है सर गए 2.5 साल में लोगों ने देखा है और चार्जेस प्रूव है। Rolling? The attitude of yours, the way you are asking me questions, the same way these Britishers and Americans do. Never once you have actually shown any sympathy for Hindus. I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, why? I put any inverted commas to mad. नहीं, हिंदुत्व कब आया? हिंदुत्व आया, 1990 नहीं हिंदुत्व बीजेपी ने बीजेपी ने हिंदुत्व शुरू किया। in Maharashtra. Shiv Sena started Hindutva first. The first Hindutva slogan Shiv Sena had in 86 when there was a by-election in Mumbai's Vileparle Assembly constituency. बीजेपी ने 87 बाई इलेक्शन में ठाकरे के शिवसेना के खिलाफ प्रचार किया था। Yes, I can prove it. In 87, Shiv Sena that and by-election in BJP were fighting each other. Yes, after that election, Shiv Sena won solo with the slogan, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। प्रमोद महाजन realized कि आडवाणी जी वहाँ रथ यात्रा निकल रहे हैं और यहाँ हम पवार और सोशलिस्ट लोगों के साथ बैठे हैं। We will lose the Hindutva base. Just to go back, many believe a turning point for the Shiv Sena was the 92-93 riots of Mumbai. Then the Shiv Sena became the defender of the Hindus of Mumbai. आपने कैसे चुना कि उद्धव ठाकरे के साथ जाना या एकनाथ शिंदे के साथ? हिंदुत्व उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व में और एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व में क्या फर्क है? एकनाथ शिंदे साहब का हिंदू ऐसा है जो पुराने से बाला साहब ठाकरे ने जो बोला था कि अपना हिंदू है, अपन किसी के इन्हें बोले दूसरी जगह जाके अपन ये करेंगे नहीं है। क्या नहीं करेंगे? उद्धव ठाकरे के साथ जो गए वो हिंदू नहीं रहेंगे। तो जिसके साथ में गए वो हिंदू की बात नहीं कर सकते। तो कांग्रेस हिंदू नहीं है? कांग्रेस किधर है? कैसी बात है? हिंदू की बात कैसी है? हिंदू अगर रहते हैं तो वो करते थे ना। सावरकर को क्यों अपोज कर रहे हैं वो लोग? तुम्हारा हिंदुत्व क्या है? जो बाला साहब ने बोला है वो हमारा हिंदुत्व है। हमारे उद्धव साहब ने पता है हृदयात राम आणि हाताला काम, हे आमचं हिंदुत्व आहे। हे हिंदुत्व हे खोटं हिंदुत्व आहे, हे ढोंगी हिंदुत्व आहे। उनका कहना है कि हिंदुत्व की युति है। हम लोग का हिंदुत्व एक ही बाला साहब ठाकरे, बस बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व की ABCD तो बाला साहब से ही सीखी है और वही मॉडल को पूरे कंट्री में कॉपी पेस्ट कर। मतलब 19 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बना आपको अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा था? सालों साल कांग्रेस के विरोध में थी, बाला साहब के विचार कांग्रेस के विरोध में थी। तो वो हिसाब से अगर बाला साहब ने कहा था अगर कांग्रेस का अगर मेरे को आगाड़ी करनी पड़ी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। मुझे बुरा लगा था। क्यों? क्योंकि जो हमारी अलायंस था पहले वो भाजपा और शिवसेना के साथ था और वो एक हिंदुत्व के विचार पे बना था, लेकिन उन्होंने वो जो विचार छोड़ दिया और बाद में आपने इसके लिए वो दूसरे के साथ गए। शिंदे साहेबांच्या कामाच्या जोरावर वो हिंदुत्ववादी या विचारावर बाळासाहेबांच्या विचार घेऊन त्या कामाला आपण सर्व शिवसैनिक नाराज होतो। ज्या बाळासाहेबांनी सोनिया गांधी, शरद पवार यांना शिव्या दिल्या त्या लोकांच्या बरोबर उद्धव ठाकरेंनी सत्ता स्थापन केली, ते आम्हाला पचनी पडलं नव्हतं। तो आपके हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में फर्क क्या है? हमारा हिंदुत्व बोलता है मानुस, यहाँ का मराठी मानुस, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का शेतकरी और यहाँ के लोग, ये हमारा हिंदुत्व है। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है? मतलब ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं। ऑब्वियसली छोड़ दिया है क्योंकि हिंदुत्व के चक्कर में सेक्युलर का एक कोना पकड़कर वो ऐसे जगह चले गए जहाँ पर सेक्युलरिज्म खत्म होके एक्चुअली एक धर्म का, विशेष धर्म का वो
लांगुल चालन कर रहे हैं अभी, जिसको सेक्युलर नहीं बोल सकते, हिंदुत्व नहीं बोल सकते. The Shinde Sena says, we are the original Hindutva party, we have tied up with BJP. ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे is the नकली Hindutva party. For the past 2 months, we have been seeing, hearing on the social media ecosystem and a lot of media ecosystem that Hindus in Bangladesh have been facing atrocities and have been facing attacks. Largely this ecosystem who is propagating this is the BJP. This is what I asked the ME to clarify. Are Hindus in Bangladesh being attacked or not? There have been several cases. And if they are, why are we playing cricket with Bangladesh when it's not even an ICC tournament? This is the Hindutva. This is their fake Hindutva, which we are against. Our Hindutva is Hridayat Ramani Hatala Kam. Our Hindutva doesn't tell you what to eat and how to dress. Our Hindutva will protect our religion when we have to. You know, Sahil, I want to tell you, I found it interesting when he just now gave a cricket analogy. 1991, Wankhede pitch got dug up by Shiv Senics. कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे देश में नहीं. ये मेरी जो मातृभूमि है, इस पर नहीं. आप चाहे जहन्नुम में जाके और क्रिकेट खेलना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं ये करूँ, विरोध नहीं करूँगा, मगर मेरे हिंदुस्तान में नहीं. And at that stage, you know, playing with Pakistan, he saw as double standards if Pakistan was sponsoring terrorism against India. He was very clear about that. Now I've got Aditya Thackeray all these years later, what is it, 33 years later telling me why are we playing with Bangladesh? वो कह रहे हैं असली हिंदुत्व उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं हूँ, ये जो है नकली हिंदुत्व. अरे हिंदुत्व, अभी हिंदुत्व की परिभाषा जो है ना, इनको मुझे लगता है कि लोग आने वाले विधानसभा में सिखाएंगे. लोकसभा हुई है, लोकसभा के पहले और कल तक देश प्रेमी इनके हाँ अभी आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बराबर है ना. वो देश प्रेमी बोलते थे. वहाँ पर हिंदू शब्द जो है इनके मुंह से निकलना भी मुश्किल था. तो ये जो है बाला साहब हमेशा बोलते थे आई एम मैड हिंदू. आज जो है ये हिंदू शब्द लेने से डरते हैं, क्योंकि इनको जो है वोट बैंक, अभी हिंदू की वोट बैंक चली गई है, मराठी की वोट बैंक चली गई है, अभी एक वोट बैंक बची है. तो उनको लुभाने के लिए और उनसे मतलब एक डर है अभी कि ये भी न चले जाए, इसलिए अभी एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ गए वो. Maharashtra is the only state where there are two parties with a Hindutva ideology. It's BJP and Shiv Sena. And two Shiv Sena. And two Shiv Sena. But we need 3 parties. Let's plus Manse. Plus Manse, 4 parties. But let's consider it together. So 19% of the vote share of the Shiv Sena still claims to be a party with the Hindutva ideology, separate from that of the BJP. It is the only state across India. Issue is dividing that vote. Yeah, issue is dividing that vote. Will that 19% vote go one way to Uddhav Thackeray? Will it go to Eknath Shinde or will it get divided? It will get divided. It will get divided. On what basis? One, the local leader. Suppose Prakash Akolkar is a local leader. He has some 10 supporters from Shiv Sena. 5 people out of them will say, no, whatever happens, we will support Prakash Akolkar. So wherever Prakash Akolkar will go, they will be with him. So that one vote. 2, some people will say the BJP is ideologically closer to us, so we will go with Eknath Shinde. Some people will say, no, this is our regional vote, this is our regional force vote, so we will remain with Uddhav Thackeray. Uddhav tried to find a very interesting middle way. Uddhav had first pointed it out, we have to extract or take away Hindutva from BJP. Correct. Was this split inevitable? Given what you are saying, कि एक ना एक दिन ये पार्टी टूटनी थी. Once Bala Sahib was no longer there, of course, it was not going to be possible to hold. Had it not the BJP, it wouldn't have been possible to have a split in Shiv Sena. Yes. So it was BJP's need. Yeah. And they tried to. Yeah. You are telling me if the BJP was not there, Shiv Sena would not have split. You are right. I mean, there were people who had split away from the Shiv Sena. Chhagan Bhujbal, Narayan Rane, Raj Thackeray. Yes. But this time, the person who split from Shiv Sena became the chief minister. Eknath Shinde. Eknath Shinde. So he went with the party. If he wouldn't have been a chief minister, it would have been difficult for him to run the party right now the way he is running No, it. that means power is the only ideology. Exactly. नहीं, अभी तो power ही रह गया. नहीं, so therefore मराठी मानुस से मराठी मानुस के लिए job चाहिए, नौकरी चाहिए. From there you move to Hindutva. To now you move to बस सत्ता चाहिए. It's not an honest regional party. That's exactly the point. It's not an honest. Even Eknath Shinde Shiv Sena can't be described as honest sons of the soil party. It's an extension of the BJP. It's in political circle. I'm sure you also know that it's called as BJP Shiv Sena. Yeah. So BJP is B team. Yeah, BJP is B team. Official B team. And where does Uddhav Thackeray then go in there? This is exactly the point. Now he will have to reinvent the face of an opposition. Yeah. He will have to reinvent, and he's reinventing. नहीं, but ठाकरे बिना शिवसेना आपको कैसे दिखाई देती है? बाला साहब के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन पीढ़ी बदलती रहती है.
और बदलते पीढ़ी के साथ परिवर्तन भी होता है। मैं आज एकनाथ शिंदे जी के साथ उत्साह से, वही उमंग से मैं कार्य करता हूँ। There's an interesting thing which I noticed at Azad Maidan yesterday. The satraps of the party, the original Shiv Sena, I mean the united Shiv Sena, are with Eknath Shinde. So basically what I've realized that you were unable to keep your leaders with you, and that is the reason why you're facing this existential crisis. All of those leaders today are facing their own existential crisis, and had they not gone with the BJP, not run away to Surat, they would have been in jail. My point is this, that you want to do politics for yourself, you want to do selfish politics for your post or to save yourself from jail, 100% do that. But try doing it once without using my party's logo, try doing it once without my party's name, and try doing it once without my grandfather's face. Show your own family's face, show your own face. बिना बीजेपी के सपोर्ट के आप नहीं जिंदा रह सकते। कुछ भी करे, अरे ये अभी कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे हैं, इनको बोलो अलग इलेक्शन लड़ने के लिए, हम लोग तैयार है, इनको बोलो सामने सामने लड़ने के लिए। Are you trying to create a new Maharashtrian identity or not? I'll tell you what. Yes, at the core of our ideals is Hindutva, which is our Hindutva and not the BJP's Hindutva. At the core of our ideals is also the Bhumiputra, which is the Marathi Manus, and the best interests of Maharashtra. Our new ideals, or whatever is needed today, is basically restoring the system back to the basics, creating a system which has been broken down by this government, creating a law and order situation that has been broken down by this government. जब ये आइडियोलॉजी आदमी छोड़ देता है ना पार्टी, तो पार्टी ज़्यादा दिन रहती नहीं है। तो आज इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो मूळ तत्वावरती शिवसेना जसा जन्म झाला, हे मूळ तत्व जे आहे ते बाजूला ठेवले, बाजूला सारले। बाळासाहेब जिथून पण बघत असतील त्यांना त्रास होत असेल की अशा परिस्थितीचा। I have to also start getting trilingual. No, you are already trilingual. नहीं, पर ये You speak Gujarati also. Shrikant is a little step ahead. Step ahead. I understand Gujarati. I can't speak. Shrikant is step ahead of me. Your favorite memory of your grandfather. Is there a memory that stands out for you? Every morning while going to school, the ritual was, whether you're early, whether you're late to school, even if you get a late remark in your school, you have to first go meet granddad and then go to school. And if it's raining, a little heavy, he would say, "Jao diya sutti." So एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ तो चीज बताइए जो हम कोई नहीं जानता है। सर, वेरी इमोशनल। इमेजिन द जर्नी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। अलग अलग कंपनीज में एज अ वर्कर काम करते थे, एज अ शिवसैनिक काम करते थे, रात को रिक्शा चलाते थे। तो ये सब हमने देखा है। तो इसलिए जो है वो कॉमन आदमी का, कॉमन शिवसैनिक का क्या दुख है वो उनको पता चलता है जब से। और 24/7 ही इज वर्किंग। He says CM is common man. CM is not chief minister, it's common man. How do you see that? I think everyone in Maharashtra knows that this CM is contractor mantri. After covering Maharashtra for 35 years, the one thing that disappoints me is that I grew up in a state where you could have differences, as I had as a journalist with Balasaheb, but there was a great degree of, I think, respect, civility above all else. That's gone. You know, when I heard both these rallies yesterday, there seems a lot of bitterness. अहो अमित जी, एक तर पहिलं तुमचा भाजपा सांभाळा। अमित शहाजी, तुमच्या भाजपच्या झाडाला दाढीवाला खोडकिडा लागलाय आणि तुमच्या बोंडावरती गुलाबी जॅकेटवाली आळी पडली ती बघा। सत्ता पाहिजे, सत्ता पाहिजे, सत्ता जिहाद। बाळासाहेबांच्या विचारांशी बेमानी करणाऱ्यांपासून शिवसेना आपण मुक्त केली आणि म्हणून आजाद शिवसेनेचा हा आजाद मेळावा आहे। Just wondering whether the average Shiv Sainik wants just, or many Shiv Sena workers just want power. If the Shiv Sainiks wanted only power, they would have all hopped over to Azad Maidan yesterday, where the Gulams were speaking. ये गद्दार बिद्दार वर्ड से कोई नहीं फर्क पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। लोग जो है हमारे साथ है, वो लोगों ने अभी प्रूव कर दिया। ये रोज रोज एक ही टेप रिकॉर्डर बनाओगे, बजाओगे तो लोग भी बोर हो जाते हैं। कुछ नया करो। Obviously, there is a sense of betrayal, and there's a sense of, can you even be human if the way you've backstabbed my father in his lowest times, toughest times, after 2 surgeries, and everyone knows what happened, right? But this is about where my state moves. Today is being trying to go, or rather be forced into a BJP ideology, which Maharashtra will never accept. ये 2.5 साल में अगर लोगों के पास जाते ना, अगर कि 2.5 साल पहले हम लोग जो काम कर रहे थे डेवलपमेंट का, ये इन्होंने रुकाने का काम किया ना, ये अगर बोल सकते
तो लोकसभा में कुछ और चित्र देखा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं. The battle within a battle is also generation next. You're 37 on one side, Aditya Thackeray is 34 on the other side. Are you somewhere trying to redefine the way the Sena looks at itself for the future? Is there a battle within a battle for generation next? Naya Shiv Sena or new generation? To take the mantle of Shiv Sena. Who is going to take it forward? Aditya Thackeray or Shrikant Shinde? Common Shiv Sainik will take the legacy ahead. It is their family party. I don't have battle with anyone. It is their family party. It is their family party. They are there to decide. Very proud of the tradition, very proud of the surname, the legacy, the responsibility that comes with the legacy. I think that is very, very important for me to realize, and the sense of expectations that the people hold. So you are saying you are not a family-based party, you are a party of karyakartas. Let me ask this common karyakarta called Shrikant Shinde. You miss being a doctor? यार इतना MBBS किया, MS किया, और you have entered politics. अरे राजदीप, अभी आपको इतने साल तक आप प्रोफेशन में, आपको अगर पॉलिटिक्स में हम लाए तो आप मिस करोगे आपका प्रोफेशन. You will go in politics, Rajdeep? Are you sure? श्रीकांत जी आप वही रहिए, मुझे वही मैं सवाल पूछते रहूँगा. तो मुझे लगता है वो जो 10 साल थे मेरे लाइफ के, उसका एक अच्छा उपयोग मेरे पॉलिटिकल लाइफ में हुआ, करियर में हुआ. You never practiced as well. I practiced for 3 years after becoming an MP. But later on, you cannot balance both the things. Both he wanted to do knee replacement and hip replacement. He ended up replacing the Shiv Sena. Both he wanted to. He's laughing. If Aditya Thackeray was there and he's seeing you on camera, what will you tell Aditya? I don't want to say anything to him, boss. No, nothing. He was your former colleague. You were in Yuva Sena with him. जो इंसान ग्रास रूट से आया, स्ट्रगल करके आया, तो वो इंसान परफॉर्म करता ही है. जो सिल्वर स्पून लेके आया, गोल्डन स्पून लेके आया ना मुंह में, उसको ये परिस्थिति से जूझना बहुत मुश्किल हो जाता है. I think वो मैसेज आ गया इसमें. This line has given the message. There are some characters I don't respond to, but not responding to him. However, the illegal CM, Mr. Shinde, quite often says that he's a farmer. He should create an agricultural university of his own, because slowly over the past 5 years, he suddenly got a farm, he suddenly got 2-3 villages around it. There were no roads leading to his village, but 2 helicopters would swoop in and swoop out. It's not suddenly. Isn't 10 years sudden enough? Okay, you encounter all kinds of people at political rallies, especially a Shiv Sena rally. क्या तुमने पहन के रखा है? सर, ये हमारी माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा है. हम उनको दिल से चाहते हैं, इसके लिए हम आज उनके जैसे बन के आए हैं. लेकिन आप उनको कॉपी कर रहे हैं. बाला साहेब ठाकरे तो एक ही है. वो एक ही है, लेकिन उनके दिल में हम बसे हैं सर, इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं सर. अरे वाह, तुम्हारी दाढी है असली है नकली है? ये असली है. एक सांगा, खरा टायगर कोण, हा की मी? मीडियाचे टायगर आहात, पण हिंदुस्तानचे टायगर हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे. टाइगर जिंदा है भाई. कल एंड में उद्धव ठाकरे ने एक मशाल उठाया और कहा कि देखो सिंबल तो हम शपथ शपथ दिलाई. मी शपथ घेतली होती तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने. मी एक स्वाभिमानी महाराष्ट्र प्रेमी म्हणून शपथ घेतो की 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र मी लुटारू आणि दरोडेखोरांच्या हाती जाऊ देणार नाही. इन्होंने एक शपथ जो है शिवसैनिकों को, जो उनके यूबीटी के, उनको दिलाई, क्योंकि इनको अभी भरोसा नहीं है किस पे. भरोसा नहीं, उनको लगता है आप भगा के लेके जाएंगे उनको. अरे इनके पास आयडियोलॉजी बची नाही, तत्वच वाचले नाही, मूळ विचारधाराच नाही त्यांच्याकडे, तर लोक कशाला राहणार. Aditya Thackeray fighting a losing battle. Will the sun set on the Shiv Sena if you lose this election? Every common thought today is the MVS forming government, irrespective of who wins how many seats. Having said that, and God forbid, even if I lose, I will not stop fighting for Maharashtra and Mumbai and the way it's being sold to a few industrialists and to the contractor friends of Eknath Shinde. जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे. अरे इनको किसी पे भरोसा नहीं है. इनको शिंदे साहब पे भरोसा नहीं था, इनको राज ठाकरे जी पे भरोसा नहीं था, इनको नारायण राणे जी पे भरोसा नहीं था, किसी पे भरोसा नहीं. इनको खुद के परिवार में भरोसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. मी उभे उभे नाही बोलत, मी नंतर बसून बोलू. अच्छा, नंतर बसून बोल, पर बिल्कुल तैयार, फाइट के लिए तैयार. Yes.
हाँ एकदम 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 अच्छा, I am joined by a very special guest. Rashmi Thakre will not say. I never say anything. Rajdeep, don't catch me. Okay, don't catch her. She is the power behind the throne, not in front. असली शिवसेना किसकी? आपने देखा होगा असली शिवसेना किसकी है, आज देखो ना। एक आजाद मैदान पे एक शिवाजी आजाद पार्क। मैदान तो गुलामों की सेना है। Who is the real heir to the Bala Thakre's legacy? UBT Sena or Shinde Sena? It will be easy for us because people of Maharashtra are waiting to see what was done 2.5, 3 years ago. That revenge people need to take in a democratic way, that is by ballot. लोग ये समझते हैं ये विधानसभा चुनाव डिसाइड आखिरी है। मैं फिर से कहूंगा आपको। अरे फिर से आपको हर एक इलेक्शन चाहिए, इसके बाद जाओगे ग्राम पंचायत में जाओगे। अरे ग्राम पंचायत प्रूव करते हैं, ग्राम पंचायत में किसके ज्यादा आते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। Okay, so assembly is the last battle. Was this battle we will win? Or you have already won the battle, you should say. See, we are not overconfident. Okay. We have worked very hard. Lot of projects, welfare schemes, everything. जो कर सकते थे 2 साल में वो हमने किया है यहाँ पर. He still hasn't answered the question. Will these assembly elections decide the fate of either of the Shiv Sena? We are very much confident that we will have a best strike rate. We will win majority of the seats and we will form the government. With Eknath Shinde as chief minister? See, the chief minister who will become the chief minister, I think I am a very common कार्यकर्ता, Shiv Sainik. I mean, chief Sahil, minister says he's common man. No, chief minister कहते हैं See, I am no one to decide. It is people. Rajdeep ji, it is people to decide. बार-बार मैं वही कहूँगा आपको कि अभी शिवसेना जो है बाला साहब की शिवसेना है, जो हम लोग बाला साहब की लीगेसी आगे लेके जा रहे हैं। ये लोकसभा में प्रूव हुआ, विधानसभा में फिर से प्रूव होगा। साहिल, we'll again have an interview here only. Done. Again. Okay. Again we'll have an interview after Done. this. The day of the election results. Yeah, we'll have an interview. Yeah, that is a promise. Can you ever see a united Sena? I see a lot of people coming back, not the thieves, but the people who sort of were disillusioned or misled. If you see what has happened in the Gaddari that happened in the 2 years, everyone who had something to hide, some skeleton in their closet, went over there. So everyone who was common but came to us, did their own whatever mistakes or screw-ups wherever they did, had something to hide, have gone over to the BJP. From now, will we be still discussing a party called the Shiv Sena or not? Yes. I think yes? Yes. You are saying Shiv Sena zinda rahegi? After 10 years also. Yes? Yes. Led by whom? Don't know. It could be Aditya Thackeray, it could But be it couldn't, Eknath Shinde. it couldn't be by Eknath Shinde. He will survive only when BJP and he is in power. As long as he is in power. See, I mean, in Indian context, the political parties don't die. BSP is still alive. PWP formed in 1960, Peasants and Workers Party. It's still alive, 1 MLA, but it's alive. No, but you said that because you said it is not like the DMK. That's why I'm wondering. Will it survive? It will, I have... Or will BJP just take over that space? BJP will not take over that space. Will it survive, Sahil? It will survive. He's the youngest, so you will be around. 3 of us, we don't know, but you will be around. I will definitely. तुम तो होगा, 81. You're like Bala Sahib, you will live old. No, so I'll have the last words actually. Yes, please, please. I think the party will survive for the sole reason is because the Maharashtra time and again have proved that Maharashtra needs a regional party, and that's why they have kept almost 30 to 35% vote intact, which they have not voted for the national parties. The Congress and BJP, they did not vote. 35% vote do not go to the national parties, and that's why the regional party will survive. Maharashtra is yearning, searching, waiting for a regional party. It's been a weekend to remember for me in my home city, where I began my professional career 36 years ago. Reminiscing my good old days as a journalist with few old friends. Okay, so conclusion, Shiv Sena zinda rahegi. हम 4 रहे या ना रहे. नहीं मैं किसी साइड में नहीं हूँ, मेरे को फंसा देगा. Meeting the cadres of a broken Shiv Sena. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. आगे बढ़ो. एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो. नहीं. But good to have you. Yeah. Thank you very much. Very good to speak to the next generation of the Shiv Sena, and like his father, chhodta nahi hai. And also getting a glimpse
of what might lie ahead for the Shiv Sena. You think he would have been on Twitter? Would have been interesting, but I don't think so. You think he would have been on Facebook? No, no, Twitter? no, no. He no. might have drawn cartoons on Facebook. Or He had started cartooning at the end of, around 2012 again, when really? just before he passed away. We'd got him a sketchbook and he had started doing that. Oh, really? What's the next chapter in this Sena versus Sena battle remains to be seen. But I'll leave a message for both the cadres, and it comes from the big man himself, the iconic Bal Thackeray. Don't feel that if we have a mammoth rally, then the seat is sure. No, don't be under that impression, well, whether we are going to get the power, because if we go on that trance, then the workers particularly, they will become lazy, lethargic, and we had that shock.